So, Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining. I'll give it to Sadia to start it in Urdu officially. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सादिया है और मुझे टुवर्ड्स वायलेंस फ्री होम के प्रोजेक्ट के लिए उर्दू पंजाबी स्पीकिंग पीयर के तौर पर मुंतखब किया गया है और मैं इसको बड़ा एजाज़ समझती हूँ कि कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन के स्टेशन पे मुझे काम करने का मौका मिला है और ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प प्रोजेक्ट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल फैमिलीज़ में ये बहुत बड़ा इशू है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो हमारे जो प्रोग्राम के बहुत से मकासद में से एक पहला मकसद ये है कि हम आम पब्लिक और आम लोगों को ये मालूमात फराहम करें कि हमारे माशरे में किस तरह के मसाइल हैं और लोग किस तरह के मसाइल हैं जिनका शिकार हो रहे हैं और फिर उनको मदद लेने के लिए बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि वो मदद कहाँ से लें। और कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन और टुवर्ड्स वायलेंस फ्री होम के इश्तराक से ये प्रोग्राम किया जा रहा है और आप इसका जायज़ा लेने के लिए कोलिशन ऑफ मुस्लिम वुमेन की वेबसाइट को भी मुशाहिदा कर सकते हैं जो कि cmw/kw.org है और आप चैट बॉक्स पे इसकी मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा आप विसाम हुसाम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा ये प्रोग्राम मुस्लिम लीगल सपोर्ट सेंटर के बाहमी इश्तराक और कोलिशन ऑफ मुस्लिम वीमेन के इश्तराक के साथ आप तक पहुंचाया जा रहा है और मुस्लिम लीगल सपोर्ट सेंटर के बारे में जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में ब्रदर मुस्तफ़ा खान और सिस्टर आसमा रूही हमारे साथ हैं और मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन लोगों ने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमें इनके ज़रिए से जानने का मौका मिलेगा कि हम अपनी मालूमात कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ ब्रदर मुस्तफ़ा हैं जो कि बैरिस्टर और सॉलिसिटर के तौर पे फैमिली लॉ के लिए काम कर रहे हैं और ये कनाडा ओंटारियो के गवर्नमेंट लीगल क्लिनिक के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कि ख़ास तौर पर इनकी सर्विसेज के लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को बाज़ औक़ात ज़बान का मसला होता है और बाज़ औक़ात मुस्लिम कम्युनिटी अपने मुस्लिम वकला को ढूंढते हैं ताकि वो उनको इंफॉर्मेशन दे सकें। ब्रदर मुस्तफ़ा किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये एक बहुत नॉलेजेबल वसी इल्म रखने वाले इंसान है और ये फैमिलीज़ अदालत में फैमिली लॉ के वकील की हैसियत से काम करते हैं जो कि बहुत से टॉपिक्स पे मालूमात फराहम करते हैं जिसमें राइट्स हैं और प्रॉपर्टी है, उसके अलावा डाइवोर्स है, उसके अलावा बच्चों की कस्टडी है और इसके अलावा स्पाउस के डिस्प्यूट्स हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा तारुफ में नहीं जाती क्योंकि ब्रदर मुस्तफ़ा किसी और तारुफ के मोहताज नहीं है और हम इनको सुनना चाहते हैं और इनसे और मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो मैं माइक ब्रदर मुस्तफ़ा को देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, जज़ाकल्लाह सिस्टर सादिया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारे लिए। इंशाल्लाह हम आज सेशन में मैरिटल स्टेटस, राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू टू Muslim Legal Support Center और Coalition Muslim Women Kitchener and Waterloo हमको ये opportunity देने में। Inshallah, we're gonna have
like 4 सेशंस है, ये पहले सेशन आज करेंगे. So सेशंस के पहले हमको एक डिस्क्लेमर देना है, ये तो लीगल एडवाइस नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के है. जो आपके लीगल इश्यूज है आपको खुद से जाना है लॉयर को और उससे बात एक्सप्लेन करें आपकी सिचुएशन और फिर लीगल एडवाइस आपको सही लीगल एडवाइस मिलेंगे. दिस इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. सो आपको पता चलेगा कौन सी इश्यूज के लिए क्वेश्चन करना है और आपके राइट्स क्या है मैरिज से पहले और डिवोर्स के बाद. ओके, सो आपको पता इनिशियली आपको लीगल मैरिज में और रिलीजियस मैरिज में फर्क है. लीगल मैरिज के लिए 3 चीजें हैं. पहली चीज है उसकी वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब you have to consent to it. So you cannot be forced to marrying somebody Canada में. दूसरी चीज है आपको 18 years old होना चाहिए, so no child marriages. तीसरी चीज आपको चाहिए वो तो प्रोसीजरली चाहिए एक मैरिज लाइसेंस. मैरिज लाइसेंस मिलते हैं वो सिटी हॉल से और आपकी सेरेमनी करना है और इमाम के साथ. जो इमाम कर रहे हैं आपकी सेरेमनी उसको मैरिज ऑफिशिएंट कहलाते हैं, वो उसको रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए. तीसरी चीज है if you're already married you cannot remarry until you get divorced. So इसका ये जैसे मतलब है कि आपको दूसरी शादी, एक शादी अगर आपकी पहले से है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते. थैंक यू. लीगल मैरिज में आपको मिलते हैं राइट्स ऑफ सपोर्ट जैसे चाइल्ड सपोर्ट और स्पाउस सपोर्ट, और आपको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलते हैं. जैसे आप एक घर लेते और आप रहते घर आपके स्पाउस के साथ, सर्टेन राइट्स आते जब आप मैरिड होते हैं. मगर इफ यू आर नॉट मैरिड, जैसे कॉमन लॉ स्पाउसेस होते हैं, हम बाद में बात कॉमन लॉ स्पाउसेस के लिए राइट्स एक्सप्लेन करेंगे. अगर जब आप जब आप कॉमन लॉ स्पाउस है, ये प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ लीगल मैरिज के राइट्स मिलते हैं. और आपके लीगल मैरिज कनाडा में हो सकता है या दूसरे मुल्क में भी हो सकता है. कनाडा recognizes marriages in different countries. So religious marriages. Religious marriages are जैसे आपके निकाह सेरेमनी होता है. निकाह सेरेमनी मैरिज लाइसेंस बगैर वो लीगल नहीं हो सकता है. वो सिर्फ रिलीजियसली, जैसे आप साथ रह सकते हैं इस्लाम में, मगर गवर्नमेंट नहीं रिकॉग्नाइज करता है आपके मैरिज हो गए. आपको मैरिज लाइसेंस जरूर लेना है निकाह के पहले से. और रिलीजियस मैरिज से कोई लीगल राइट्स नहीं बनते हैं अनलेस, जैसे मैं बोल रहा था कॉमन लॉ स्पाउसेस को कोई राइट्स है, अनलेस आप कॉमन लॉ स्पाउसेस बन गए फिर राइट्स मिलते हैं. मगर सिर्फ निकाह के साथ मैरिज लाइसेंस के बगैर कुछ नहीं राइट्स, आपके राइट्स कोई नहीं है. मैं बोल रहा था ऐसे कॉमन लॉ स्पाउसेस के क्राइटेरिया थोड़ा बहुत डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं. एक फैक्टर लेजिस्लेशन में है, आपको उस स्पाउस के साथ 3 साल के कोहैबिटेशन और लिव विद देम, और उस स्पाउस के साथ आपके बच्चे हो गया. So if either of these will make you common law, 3 years, or if you have a child with that person.
And common law spouses, मुझे emphasize करना है, कोई property rights नहीं है, सिर्फ rights to support आपके लिए और आपके बच्चे के लिए. Foreign marriages, ऐसे मैं बोल रहा था, वो भी recognize होते हैं. So हो सकता है आप अफगानिस्तान में या सीरिया में या पाकिस्तान में वो निकाह सेरेमनी हो गए, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिला, राइट? फिर यहाँ कनाडा में रिकॉग्नाइज होता है, आपको सिर्फ आपको दिखाना है या आपके मैरिज सर्टिफिकेट, और इफ इट्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज में, फिर आपको ट्रांसलेशन, ऑफिशियल ट्रांसलेशन करना है और दिखाना है ये these are my spouse and this is when we got married. ये इम्पोर्टेंट है recognition के लिए और टैक्स के पर्पस के लिए, इसलिए CRA को भी पता होना चाहिए आप मैरिड है. दूसरी चीज है फॉरेन मैरिज के साथ, it has sister Asma, you're gonna have to translate, it has to be in compliance with the foreign laws. So if you're getting married in Pakistan, then you must follow the rules of marriage for Pakistan. तो इट्स ये भी मतलब शादी कहलाएगी, लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग जो पाकिस्तानी रूल्स हैं, जो वहाँ के असूल हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए. Thank you. Yes. और एक चीज होता है इस कैनेडियन लॉ में, वो कहलाते हैं sham marriages. Sham marriages are marriages for convenience. जैसे अब you're getting married for a reason other than just becoming someone's spouse. जैसे आपको immigration करना है, फिर आप किसी साथ कैनेडियन के साथ शादी करते हैं सिर्फ immigration purpose के लिए. Now, in family law, those sham marriages recognized hote as legal marriages. So for immigration, so Sister Asma, you might have to explain, but for immigration, it might be an issue to get the spousal designation. But as far as the family courts are concerned, if your marriage was completed legally, you are married and you are responsible for support and property issues and all of that. Sorry, if you could explain that part? इसमें जो थे, sorry. So I'll explain again. So sometimes you get married for immigrating to Canada and you don't care about this person. You're only marrying them because you want to get Canadian citizenship. This is called a sham marriage. So बात सफाई होता है कि जैसे इमिग्रेशन के लिए आप सिर्फ शादी कर लेते हो, आप और किसी चीज के बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन सिर्फ स्टेटस लेने के लिए आप शादी कर लेते हो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए. However, as far as family law is concerned, that person is your legitimate spouse. They have rights to support and property rights. So if you want to get married again, you have to get divorced. They can claim support for any children or for themselves. So even though the purpose or the motive was insincere, that person is still responsible for your support. They cannot escape that obligation. तो बेशक शादी अगर हो गई है तो सारे के सारे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो जायदाद के हकूक हैं, जो दूसरे हकूक हैं, वो स्टिल जो शादी कर रहे हैं वो स्टिल बाउंड है, वो उनको वो सब हकूक अदा करने हैं अपने. इसका ये मतलब नहीं कि वो उससे जान छुड़ा सकता है. The important thing to recognize is that the marriage was entered with consent. It doesn't matter that the person had a different purpose in mind. All that matters is that they know that I am Mustafa and I am marrying Sister Asma, for example. So that all that matters is that you knew you were getting married
you're consenting to that marriage with that specific person. तो जो रजामंदी है वो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप रजामंदी से अपनी कंसेंट के साथ आपके काम कर रहे हैं तो चाहे जो मर्जी पर्पस हो इमिग्रेशन लेने का, आपने जो शादी की, जैसे जिस पर्पस के लिए मर्जी की है, अगर कंसेंट है, आपने अपनी रजामंदी से की है, तो वो टोटली आप पे लागू। और ये so one case from the Ontario Court of Appeal, which is the second highest court in Canada under the Supreme Court, they said that if the person did not know that this was a marriage ceremony or mistaken the identity of the person they're marrying, only in those cases can you then say that the marriage can be overturned. तो ये एक मशहूर केस है जिसमें कहा गया था कि अगर यहाँ तो आपको पता ना हो कि आपकी शादी किससे हो रही है, आप गलती से किसी से हो गए, उस बंदे की आइडेंटिटी का आपको पता ना हो, सिर्फ उसी सूरत में आप ये इशू उठा सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली वैलिड रजामंदी के साथ शादी मानी जाएगी. Also that if you didn't know that this was a wedding ceremony. हाँ, और अगर आपको पता ना हो कि ये शादी की तकरीब है. Okay. हमारे मुस्लिम मुल्क में like आप multiple wives marriages कर सकते हैं, right? जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर में कर सकते हैं multiple marriages. मगर कनाडा में ये illegal act है. Okay, so criminal code में वो इसके punishment up to 5 years of jail. Whether वो offense है second marriage या even celebrating, वो जो जैसे शादी होता है, right? आप वो second marriage की शादी के attend करने के लिए, या आप एक for example इमाम है उस second शादी के लिए और दूसरी शादी के लिए, or you know if you witnessed it, वो सारे लोगों भी इस offense पे you know liable हो सकता है. तो मतलब है if आपको पता है ये दूसरे शादी हो रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए और आपको बताना है that ये तो illegal है, आप नहीं कर सकते हैं. So stay away from anything of that if it's happening in Canada. If शादी का खाना खाने ना चले जाए. yeah, so it's a criminal offense जो है ये. हाँ, दूसरी शादी कनाडा में करने criminal offenses, मगर दूसरे country में जैसे पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में कर सकते हैं and it's not an offense in Canada, इसलिए पाकिस्तान में legal है, या बांग्लादेश और इजिप्ट और ईरान आप सेरेमनी के अटेंड कर सकते हैं वहाँ, मगर यहाँ के सेरेमनी दूसरी शादी के नहीं अटेंड कर सकते हैं. वैसे तो क्वेश्चन आंसर का पीरियड एंड पे है, लेकिन अगर कोई दूसरी बीवी को वहाँ से यहाँ ला सकता है कनाडा? We're going to talk about that. अभी बताता हूँ. तो in Canada आप वो जो दूसरी बीवी के राइट क्या है, तो in Canadian family law वो recognize है spouse, जैसे and उसके support के rights भी है और उसके बच्चे के support rights भी है. Okay, Canada है वो कराते monogamous, meaning one spouse only. तो मगर if you have दूसरी शादी हो गया दूसरे मुल्क में, if it is legal उस मुल्क में, if it's legal to have a second marriage, फिर Canada will recognize that this person is a spouse. मगर immigration status के लिए वो नहीं डाल सकते spousal application, family law court में support की application डाल सकते. Is that Sister Asma, if you need to clarify anything from that, please go ahead. Thank you. It's clear. Okay, clear. तो वो spouses वो जो दूसरी बीवी और वो application डाल सकते हैं ये support के property claim के लिए
और child support के लिए, और वो भी domestic contract और separation agreements में भी enter कर सकते हैं. यहाँ के सिस्टम ऐसे है, आप इधर कोर्ट से कुछ रेमेडी ले सकते हैं या खुद से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं आपके इश्यूज के सेटलमेंट करने में. एंड यहाँ के फैमिली लॉ में जो दूसरी बीवी है वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग एंटर कर सकते हैं एंड क्लेम्स डाल सकते हैं. So if you're thinking of getting a second marriage, just remember this, your limitations and your rights. Now, पहले से mention किए. Oh, sorry, did someone say something? Okay, आप पहले mention किए common law spouses, वो criteria है. ये इस slide पे आप देख सकते हैं, इतने सारे different criteria देखते हैं court to determine whether you're common law, right? So 3 साल के whether there's a kid, priest, and you live together for 3 years, आप ये देखते हैं आपकी relationship कैसे है, whether it's stable, या हो सकता है ये मुस्लिम community में कभी होता है, मगर जैसे different communities में होता है आप girlfriend boyfriend में relationship है, मगर सिर्फ एक महीने के relationship है, right? वो तो common law spouse नहीं बनते, right? It needs to be more stable, long term. जैसे कभी होता है वो girlfriend boyfriend होते हैं, मगर you know वो आपके finances पूरे करते हैं और घर you know they buy a house and they live in the house, वो जैसे married couple रहते हैं. In that case वो बनते common law spouses because उसके finances और सबके सारे decision making, right, spouses के जैसे है, और married spouses के जैसा है. Even वो खुद से like they think themselves as girlfriend boyfriend, मगर law के view से वो दोनों spouses हो गए. दूसरे चीजें देखते हैं, you know, वो उसके like social life कैसा है, right? वो activities, you know, उसके friends वो बोलते हैं ये couple है, ये spouses है, या do they attend family gatherings together? Well, like do they eat together, sleep together, or koi plan se you know to have kids? These are all important factors hai court ke liye to determine whether aap common law spouses hai. कभी होता है like हमारे clients वो कभी legal marriage नहीं किए, मगर यहाँ आने में बहुत like 10-20 years रह रहे, कोई legal marriage नहीं है, और वो पूछते हमारे rights क्या है, say we never did marry, we never got a marriage. हम बताते, well we look at ये factors देखते हैं to determine whether they have common law spouses. If they have but if there's a child, if बच्चा है, फिर very easy होता है. इसलिए courts को ऐसे the courts have the children's interest above the parents, so they always will try to make sure that their parents are responsible. So Sister Asma, could you just interpret that for me, please? जो कॉमन लॉ स्पाउसेस है उसमें यही जो 3 साल का टाइम पीरियड देखना है कि अगर आप उसमें साथ रहे हैं, उसमें आपका रिलेशनशिप किस तरह का रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट रही है नहीं रही है, आप लोग आपस में ताल्लुक कैसा था, गिफ्ट्स दिए एक दूसरे को. अगर अब इस चीज़ में ये चीज़ है कि अगर जैसे आपके बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में, तो फिर आप पे ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं और इसको फिर करना बड़ा आसान होता है. Is there anything to add? No, that's perfect. That's perfect. और ये एक चीज आपको is very important. बहुत सारे clients बोलते like you know they cheated on me or affairs थी marriage के. Courts को marriage affairs और ऐसे adultery चीजें they don't care. वो legislation में लिखा हुआ है spousal misconduct is not a relevant factor for any of the issues. Okay, if you could translate that, please. जी, तो जो मतलब शादी से बाहर के जो अगर कोई अफेयर्स हैं तो
कोई अफेक्ट नहीं करता है तो। Okay, so common law spouses तरह से बोल रहे थे प्रॉपर्टी के क्लेम्स कोई नहीं है, so सिर्फ देखते हैं या spousal support और child support. And हम दूसरे सेशंस में ये issues बहुत more information देंगे, मगर यहाँ के लिए सिर्फ simply that legislation में लिखा हुआ है every spouse has obligation to support their other spouse to the extent they're able to. और बच्चे के लिए भी support मिलता है, मगर there's few conditions. एक चीज है वो below 18 years old, उसको भी स्कूल में full time enrollment होना चाहिए. Or if they are, mentally or have a disability or ill, right? And they can't support themselves, फिर वो उसके लिए भी child support मिल सकता है. तो मगर कभी होता है आपके पास है एक 16-year-old child, okay, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है और आपके घर पे से run away हो, like he leaves your house, right? फिर उसके लिए child support नहीं मिल सकते, इसलिए वो withdraw किया parental control से और नहीं study करना है. So this is an extreme situation, मगर like it happens sometimes. Now, कोई properties rights legislation में नहीं है, मगर if you are legal joint owner, जैसे घर लेते हैं, so दोनों finances mix करते हैं और घर purchase करते हैं, right? और legal joint owner बनते हैं. उस legal joint ownership, what do you say? It still stands. मतलब even if you're not married, you still have right to half the house. इसलिए आपके नाम title पे है. जैसे if you buy a property with a third party, someone else, your cousin, your relative, your parents, आपके नाम सारे नाम title पे हैं, or you have an interest in the house based on whose name is on the title. So that is still, you still have those rights. दूसरे remedy वो कहलाते हैं unjust enrichment. वो situation हम like और दूसरे सेशन में और information देंगे, मगर unjust enrichment में क्या होता है, जैसे आपको deposit डालना है घर के लिए, right? और let's say $100,000 deposit डालना है घर पे, और आप 50,000 डालते हैं इस deposit में, मगर आपके नाम title पे नहीं आएंगे, right? What happens is because you put in money into the house to the purchase of the house, right? You have a right at law to at least the extent of the money that you put in to purchase it. Because without your contribution, the asset could not have been bought in the first place. Sister Asa, can you just translate that last part? जैसे अब घर खरीदना है तो आपने उसमें पैसा डाल दिया, जो आपने इब्तिदाई बयाना देना है आपने, जैसे 10,000 की रकम उसमें डाल दी है. बेशक आप उसमें नाम है कि नहीं है, लेकिन अगर नाम नहीं भी है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपने वो पैसे उसके बयाने में पे किया. आप उस मनी के लिए आप रेमेडी के लिए पूछ सकते हो. Perfect. और same principle वो apply करते हैं अब जो bank accounts, cars, vehicles, properties, investments, or business interests, whatever वो उसके bank account के account holders या vehicle ownership or properties title, if you आपके नाम है उसमें, फिर आपके right है उस property के value के लिए, right? So जैसे होता है, maybe you're not married, मगर आप एक joint account है, उस joint account में आपके you have half the right to half the amount in that account. और दूसरी चीज है for common law spouses जो married नहीं है, आप ये एक domestic contract में enter कर सकते हैं, वो उसको कहलाते हैं cohabitation agreement.
उस कोहैबिटेशन एग्रीमेंट हम और बताएंगे अभी थोड़ी देर में. Okay, so you are a spouse. आप spouse है, whether legal married spouse या common law spouse. वो marriage से बहुत सारे debts होते हैं, right? So credit cards, car loan, line of credit, mortgage. आपको the debts जैसे personal debts है और joint debts भी है. Okay. The important thing is whose name is on the account. So Asma, can you just emphasize that for me? जो भी अगर हम लोग मुश्तरका तौर पे बैंक अकाउंट खोलते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा इस अकाउंट का? जिन दोनों के नाम होंगे अकाउंट पे, जिनके नाम होंगे अकाउंट पे वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे. Perfect. So, for example, जब आप लोन एप्लीकेशन करते हैं बैंक में लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए या पर्सनल लोन के लिए, आप दोनों बैंक जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठते हैं और आपको सिग्नेचर्स करने हैं, राइट? फिर इफ बोथ ऑफ यू साइन, फिर आप दोनों लायबल है इस लाइन ऑफ क्रेडिट या लोन अमाउंट के रीपेमेंट में. और ये कॉन्सेप्ट कॉल्ड है जॉइंटली एंड सेवरली. उसके मतलब है jointly मतलब दोनों responsible है, severally मतलब if one person doesn't pay, then the other person will pay the whole amount. Can you just emphasize the last part? एक इसमें ये कि जॉइंटली जिनमें दोनों का नाम है या फिर उसके लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर बोथ होंगे, दोनों होंगे. Yeah. तो कैसे डिटरमिन करना है आपकी लायबिलिटी? आपको दूसरा पार्टी से पूछ, if you don't have the document, the agreement, फिर आपको दूसरा बैंक से मिल सकते हैं या आप दूसरा पार्टी से you can ask them for that disclosure. Now, credit cards, ये सबसे important चीज है because everybody has a credit card, right? और credit cards, कोई credit cards personal credit cards होते हैं, कोई credit cards होते हैं हमारे credit card है मगर आपके spouse के पास secondary card है, okay? और दोनों charges like डाल रहे हैं इस card पे. तो if you separate and आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर है एक क्रेडिट कार्ड के लिए, आपको इमीडिएटली बैंक को जाना है और फोन कॉल करना है और सेकेंडरी कार्ड को कैंसिल करना है, बिकॉज जो चार्जेस वो डालते हैं आपके क्रेडिट कार्ड में, बैंक के फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप रिस्पॉन्सिबल है उस पेमेंट के लिए. एंड कोर्ट्स में गेटिंग रिकवरी फ्रॉम द अदर साइड बहुत दिनों लगेंगे. So could you just translate that a little better for me? तो जैसे अगर सेपरेशन हो जाती है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जाके जो अपना, क्योंकि अगर आप मेरे नाम पे क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ. तो जो मेरे हस्बैंड का कार्ड होगा सबसे पहले उसको जाके मैंने कैंसिल करवाना है, क्योंकि वो अदरवाइज वो कुछ उस कार्ड पे खर्चा करेंगे तो सारा मैं रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं जिम्मेदार होंगी पे करने. And most important thing is if you want to get that money back from them. So if they spent $1,000 after separation on your credit card, you will have to start a court application, and it will take a long time before the court makes an order for them to pay back. हाँ, तो उसका जो रिकवरी का प्रोसेस है, जो वो तरीका है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जिम्मेदार थे उस चीज़ के, आप कोर्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन वो फिर एक बहुत लंबा तरीका है अपने पैसे वापस लेने का. Okay. After separation के बाद आपको records like on credit card statements आप online से मिल सकते हैं या branch से मिल सकते हैं. आपको record करना है, records keep करना है, कौन सी transaction आपकी transactions है और कौन सी transaction आपके spouse की है आपके card में. So आपको पता चलेंगे कितने, if you need to recover, कितने recover उसके transactions से. Okay. और दूसरी चीज है कार लोन. So the car loan is जैसे आप एक है लीज
payments. Okay, आपके ownership है, like you have the car, मगर lease payments करने के लिए whoever is on the lease agreement. और car loan वो होता है जब आप car own करते हैं और आपको payments करना है जो car company के financing department के लिए. Now, I can't do this in Urdu, so it's a bit hard, but if you are the one driving the car, but the ownership or the is in your spouse's name, and the loan or lease agreement is in your spouse's name, you need to request that all of that is transferred to your name. Because if it's not, then the car legally belongs to that person, and they can request for it to be returned to them. तो अगर गाड़ी चला मैं रही हूँ, उसका यूज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन गाड़ी की जो लीज है या ओनरशिप है वो हस्बैंड के नाम पे है, तो सबसे पहला काम ये करना है, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मुझे दरख्वास्त देनी होगी कि उसकी ओनरशिप जो है, जो उसकी मलकियत है, वो मेरे नाम पे की जाए. अदरवाइज जो हस्बैंड है वो आफ्टर सेपरेशन वो क्लेम कर सकते हैं कि गाड़ी उनको रिटर्न की जाए, क्योंकि वो जिम्मेदार थे उनकी सारी पेमेंट्स के लिए. और जो दूसरी चीज है, whoever is paying, हो सकता है the loan is in, or the car payment is in his name. He doesn't want to make the car payment, and you'd want to make the payment, but you can't because you're not the account holder. If he stops making payment, then the car company might want to then take the car back because you're not making payments. जी, अगर हस्बैंड जो है वो पेमेंट करना छोड़ दें, उसकी अदायगी ना करें, जो किस्त उसकी महीने की चलती है, अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जो कार की जो कंपनी है जहाँ से आपने ली है वो उसको वापस भी ले सकते हैं. Okay. और line of credit credit card के जैसे हैं, और mortgage, जो mortgage loan agreement में whoever's name is there, उसकी responsibility है. If you're joint owners, आपके दोनों नाम है lease mortgage statement में, और फिर आपको दोनों आधा पेमेंट करने. तो सोचो आपके monthly payment is like $2,000, right? आपकी responsibility सिर्फ एक 1,000. If you pay his portion, then he legally then you can seek that he pays you back for his half. If you sell the house, he from his portion of the value of the house, he should be paying you back for any mortgage payments you made on his behalf. तो मॉर्गेज पे जिनके भी दो के नाम होंगे, तो वो अगर दोनों के नाम है जॉइंट उस पे, तो दोनों निस्फ जो होगी उसकी अदायगी करेंगे. अगर जैसे फर्ज की अगर $2,000 महीने की किस्त बनती है, तो $1,000 एक पे करेगा और 1,000 एक पे करेगा. अगर आपने हस्बैंड के हिस्से की भी थोड़ी सी मॉर्गेज की अदायगी कर दी है और बाद में आप घर बेचते हो, तो वो उस पे फर्ज है कि वो आपकी जो पैसे आपने पे किए में आपको वो पे बैक करे, आपको वापस अदा करे, उसकी अदायगी होनी चाहिए आपको. Okay, so वो तो debts थी, या post separation भी expenses भी है. वो चीजें जैसे like ongoing every month आपको pay करने use के basis पे. So utilities, जो इंसान घर में रह रहे हैं उसकी responsibility है utilities के है. कभी होता है आप रह रहे घर पे और husband like left the house and वो अभी utilities pay कर रहे हैं, फिर वो payment stop करते हैं. So आपको you have to remember you will be responsible for the utilities जैसे gas, electricity, internet, house fees. आपको responsibility, it's your responsibility to pay that, even if you don't own the house. उसके नाम पे हो सकता है, मगर if you're living it, you have to pay for it. अगर आप यूज कर रहे हैं
जी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, हाइड्रो, गैस, इंटरनेट, कॉन्डो फीस जो भी है, तो जो भी उसको यूज़ कर रहा है तो वो ज़िम्मेदार होगा। और इसका मतलब ये है कि डज़न्ट मैटर कि आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, सिर्फ यही मैटर करता है कि अगर आप उसमें रह रहे हो। थैंक यू। लीज के लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है। जब आप लीज एंटर करते हैं, आपके नाम लीज में अपीयर करते हैं, राइट? तो whoever लैंडलॉर्ड के सिर्फ एक चीज है, वो उसको रेंट लेना है आपसे, ओके? कोई भी रेंट पे, that's what they care about, right? मगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नाम लीज में whoever's name is in the lease. कभी तो जिसका होता नाम है, sorry, go ahead. जी, बस जिसका नाम लीज पे है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। Yeah, right. कभी होता है लाइक आप नेगोशिएट कर सकते हैं that वो आपके लीज ये रेंट पे करते हैं, और फिर आप इन एक्सचेंज फॉर स्पाउस सपोर्ट, या उसको नहीं करना है, फिर आप पूछ सकते हैं मेरे लीज के लिए अफोर्ड करने के लिए मुझे स्पाउस सपोर्ट चाहिए, so I can live there because I cannot afford it. दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इंश्योरेंस कवरेज। घर के लिए इंश्योरेंस है, गाड़ी के लिए इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी है, मेडिकल प्रीमियम इंश्योरेंस, बहुत बहुत सारे इंश्योरेंस का इंश्योरेंस के पेमेंट्स जाते हैं। एंड आप इफ यू हैव, आपके पास घर, आप रह रहे घर पे या आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरेंस मेंटेन करने के लिए। आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जैसे वो आपके स्पाउस आपके इंश्योरेंस पे करते हैं और फिर उसको क्रेडिट मिलता है, जैसे ओके इस महीने के लिए वो मेरा इंश्योरेंस पे किया, फिर मैंने आई एम नॉट गोना आस्क फॉर मनी उस दिनों के लिए, इसलिए वो आपके एक्सपेंसेस पे कर देते हैं। जब आप सेपरेट होते हैं, कभी होता है आपको कुछ नहीं पता है, आपके स्पाउस बहुत कंट्रोलिंग था, और आपको पता नहीं कौन सी यूटिलिटीज है, आपको पता नहीं लीज कहाँ है और इंश्योरेंस पॉलिसीज कहाँ है। और जब आप सेपरेशन से पहले या उसके बाद आपको कोशिश करना है to obtain was to log in information for utilities or a copy of the lease. आप लैंडलॉर्ड से पूछ सकते हैं आपको कॉपी दें, और आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको पता you need to find out who is the insurance company. If you are still married and not separated, try and find that information as soon as possible. If your husband or your wife, whichever, is hiding that information from you, to get involved in your finances, understand the costs of running your home. Could you just translate that for me? जी, जैसे डिफरेंट किस्म की इंश्योरेंसेस होती हैं, तो जैसे ही अगर कोई सेपरेशन हो रहा है या इवन आप अभी स्टिल रह रहे हैं, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, स्टिल रिलेशनशिप में हैं अपने लीगल्स में, और आपका बन रहा है इरादा सेपरेशन का, हस्बैंड और वाइफ बोथ, मतलब उनको चाहिए कि मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस की, जैसे अकाउंट का लॉगिन है, CRA का लॉगिन है, डिफरेंट किस्म की जो इंश्योरेंसेस हैं, कार की, हाउस की, डिफरेंट किस्म की जो इंश्योरेंसेस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मतलब लेने की कोशिश करें, अपने पास अपने आप इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करें कि आपको कभी ज़रूरत पड़े किसी से कॉन्टेक्ट करने की, इन्फॉर्मेशन लेने की, तो आप वो टाइम पर आप ले सकें। Yeah. Okay. बच्चे के लिए एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, सो हम दूसरे सेशन में चाइल्ड सपोर्ट डिस्कस करेंगे, मगर जस्ट शॉर्टली आज आपको पता फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जैसे फूड, पानी, शेल्टर, कपड़े, फॉर द चाइल्ड इज पेड फ्रॉम चाइल्ड सपोर्ट। उसको ऑन टॉप ऑफ दैट
उसके ऊपर से वो जैसे डे केयर एक्सपेंसेस है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के एक्सपेंसेस है, मेडिकल डेंटल एक्सपेंसेस, उस चार्ज फोर्स से नहीं आता है, वो कहलाते हैं स्पेशल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ओके, उस एक्सपेंसेस आप और आपकी स्पाउस शेयर करते हैं। चाइल्ड सपोर्ट सिर्फ जो स्पाउस बच्चे के साथ नहीं रह रहे हैं वो पे करते हैं, मगर ये चीज़ें डे केयर एक्टिविटीज, मेडिकल डेंटल एक्सपेंसेस आपको शेयर करना है। सो एंड वो उस प्रोपोर्शन शेयर करने के लिए डिटरमिन करते हैं आपके दोनों के इनकम देखते हैं। जैसे if you are one of you earns 50,000 and the other one earns 20,000, the split is 60-40, for example. So my advice है आपके लिए that always keep receipt for all purchases for the children. Invoices, the daycare से invoices या एक्टिविटीज के इनवॉइसेस आपको सब कुछ लाइक एक फाइल में या कंप्यूटर में सेव करना है। ओके, वो जो पेमेंट कॉन्फर्मेशन वो सारे सेव करने हैं, प्रिंट आउट या इलेक्ट्रॉनिकली आपको सेव करना है। जो आपके पास बैंक अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड, पर्सनल और जॉइंट, आपको ओपन लाइक रखना है। इसलिए आप हो सकता है आपको वापस जाना है और बैंक स्टेटमेंट्स को देखना है टू शो दैट ये मैं पे किया, वो क्या पे किया, राइट? सो डू नॉट क्लोज एनी अकाउंट, कीप देम ओपन। और कभी होता है वो स्पाउस से और या आपके एम्प्लॉयमेंट से मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पूछना है benefits card, which you need to ask them for the benefits card or at least have the information so that they can, so that you can make claims for the children. Okay, so this section हम डिस्कस करेंगे वो कहलाते डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। जैसे बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, वो सेम फैमिली लॉ में अभी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हैं। वो निका एग्रीमेंट, जो निका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? एंड उसके से कोई राइट्स मिलते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होते हैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट से। दूसरे नाम है डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन एग्रीमेंट, कोहैबिटेशन एग्रीमेंट, फ्रेटर्निटी एग्रीमेंट और फैमिली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये सारे सेम चीज़ है, ये सारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके रिक्वायरमेंट्स सब सेम है, मगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे हैं। ओके, सो हम जल्दी से देखेंगे ये कैसे बनते हैं दूसरे ये सारे कॉन्ट्रैक्ट। Baba did not come yet? I just know. Yusra नीचे आपको शुरू किया था स्कूल में? Okay. Marriage contract. So जब आप दोनों लोगों मैरिड होते हैं या और आपको मैरिज अभी होने वाला है, आप जैसे प्रीनuptial एग्रीमेंट आप कभी सुने में, प्रीनuptial एग्रीमेंट या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉपर्टी डिवीजन, ओनरशिप की प्रोविजंस आ सकते हैं, सपोर्ट ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, or आपके desires for education या religious upbringing of the children आप डाल सकते हैं, और कोई और चीज़ें आप डाल सकते हैं। मगर जैसे वो कहलाते custody और access, वो उसके लिए provisions नहीं डाल सकते। इसलिए वो सिर्फ जब separation होते हैं आपको देखने उस circumstances में कौन से वो बच्चे के best interest में क्या sorry, it matters more, sorry my throat, it matters for custody and access only determined at separation because it depends on the circumstances and the best interest of the child.
Also, if you could. Sorry, I was muted. Sorry, so I was just explaining that in a marriage contract, you cannot put provisions of custody and access or decision making and parenting time, because the only consideration for the court is the best interest of the child at the time. So when you're getting married, of course, you don't have any children, you don't know. So you have to wait until separation, and then you can enter into an agreement at that point about who is going to have decision making and who is going to have parenting time for how long. तो ये सब मसाइल जो है ये वो सेपरेशन के बाद ही निकलते हैं, और कोर्ट हमेशा जो है वो ये देखती है कि सबसे वो चीज़ जो कि बच्चे के बेहतरीन मफाद हो, बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन हो, बच्चे का जिसमें भला हो, वो हमेशा उन्हीं चीज़ों को कोर्ट सामने रखती है। Okay. Cohabitation. Okay, so वो marriage contract है. For cohabitation agreement, जब वो आप common law spouses है, आप डाल सकते हैं property के provisions. So law में कोई property rights नहीं है, मगर contract में आपको rights मिल सकते हैं जब आप common law spouses हैं. So आप property के provisions डाल सकते हैं, support obligations भी डाल सकते हैं. मगर if you get married, आप शादी करते हैं बाद में, फिर उस cohabitation agreement automatically marriage contract बनता है और still binding होता है unless आप दोनों like amendments करते हैं उस contract को. Okay. एक concept है legislation में, वो कराते setting aside the contract. उस circumstances में आप कोर्ट देखते, सिर्फ कोर्ट वो contract को set aside कर सकते हैं unless the parties, दोनों parties consent करते हैं वो contract को terminate करने के लिए. मगर few circumstances court में intervene कर सकते हैं और वो आपके order डाल सकते हैं that this domestic contract is not valid. एक है जो domestic contract सही से नहीं बना, meaning right, उसको it needs to be in writing, needs to be signed by both, and needs to be witnessed. If those things are there, फिर वो contract सही से बन किया. मगर दूसरे circumstances में court भी intervene कर सकते हैं और invalidate contract को invalidate कर सकते हैं. एक circumstance है जो एक party disclose नहीं किया, आपके उसके पास significant और बहुत बड़ा से debt है या उसके पास है बहुत सारे assets, जब आप contract बनाते हैं. सोचो उसके पास बहुत सारे properties है एक country में और नहीं disclose करते हैं, और उसके पास बहुत सारे income है वो नहीं disclose करते हैं, and then वो आपके support provisions उसके छोटा से income से बन गए. So like instead of paying $1,500 support, he's paying $500, right? उस circumstances में आप court को request कर सकते हैं that term is set aside, is removed, because it would be unjust, because they lied about their income or they lied about their assets. दूसरी circumstance है वो बोलते हैं आप जैसे आप contract से पहले signing, आपको always need to get legal advice. Okay, तो कभी होता है आप अभी निकल contract sign करेंगे या दूसरे contract sign करें, prenuptial agreement sign करेंगे, मगर you don't know what this document says, और फिर आपके like they take advantage of आपके ignorance. आपको नहीं पता है इस contract में, मगर आप sign कर रहे because you want to get married. And then later अब बाद में आप discover करते हैं that this was all wrong. आप argue कर सकते हैं that उस वक्त जब मैं sign कर रहा था
कोई ने हमको एडवाइस दिया, कोई नहीं बोल रहा था आपको लॉयर से बात करने, और ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप कोर्ट के एप्लीकेशन डाल सकते हैं टू इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट और void the contract. और दूसरी और आखिरी चीज है जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरली में एंटर करना है. If you were forced to enter the contract, then it's not a valid contract. Jesse, like someone says, if you don't sign this contract, then I'm going to send someone to hurt your family back home. Also, could you just give me that example? हाँ, जैसे आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते या किसी किस्म का भी जबर नहीं है, किसी किस्म का कि आप उसको धमकी लगाएं या किसी तरह से उसको मजबूर करें वो करने के लिए, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता. The other दूसरी चीज है, if you are under the age of 18, आप contract नहीं enter कर सकते हैं. So if you're 17 years old, आप sign नहीं कर सकते. You have to wait till you're 18. फिर वो contract नहीं valid है contract law में. और बहुत सारे circumstances इसमें ये तीनों के categories में आ सकते हैं, मगर ये बहुत broad, like purposely it's left very broad. So इसलिए बहुत सारे circumstances हो सकते हैं. और your separation agreement वो सबसे most important चीज है. So in separation agreement covers all issues. सारे issues जो family law में है, separation agreement में settle हो सकता है. तो ये separation agreement court के alternatives है. Okay. Same contract जैसे हम बता रहे थे, ये भी domestic contract है. आपको it needs to be in writing, witness, signed by both parties, और आपको legal advice लेने इस sign से पहले. Okay. वो कराते हैं independent legal advice. और आप वो जो lawyer आप जाते हैं उसके साथ independent legal advice consultation ले सकते हैं. वो आपको certificate भी sign करते हैं, और वो ILA certificate separation agreement के साथ attached होता है. जब आप sign करते हैं वो ILA बगैर, फिर दूसरा statement attach करते हैं, वो कराता है waiver. उस waiver में आप sign करते हैं, और उस waiver that it says basically, I was told to get advice and I chose not to get advice and I am still signing. Can you explain that part, Asma? उसमें ये कि ये सेपरेशन एग्रीमेंट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप बगैर किसी अदालत की मुदाखलत के बगैर भी ये साइन कर सकते हैं. उसमें ये कि दोनों को साइन करना होता है, वहाँ पे आपके लिए गवाह भी मौजूद हों और दोनों पार्टीज उसको साइन करेंगी, और कोई भी लॉयर आपको ये सेपरेशन एग्रीमेंट आप उससे बनवा सकते हैं. उससे पहले ये है कि जो एक अलग लीगल एडवाइस के लिए रिकमेंड करते हैं, तो एक तो सेपरेशन एग्रीमेंट होता है, और दूसरा जो है वो एक वेवर होता है कि जो आपको साइन करना होता है कि हाँ हमने ली है कि नहीं ली है, जो भी आप चॉइस चूज करो. और ये दोनों पार्टीज पे जो है वो फिर दोनों पे लागू होता है. Okay. और फिर आप उसको सेपरेशन एग्रीमेंट को आफ्टर साइनिंग फिर आप ये उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप उसको डाइवोर्स कर सकते हैं अदालत के साथ. Yeah, so वो separation agreement एक चीज नहीं कर सकता, आपको divorce नहीं दे सकता है, मगर agreement में डाल सकता है that agreement signing के बाद any party uncontested divorce application डाल सकते हैं. और you can वो भी डाल सकते हैं provision में कौन divorce के लिए fees pay करेंगे. इसलिए divorce fees है अभी like $600 divorce लेने के लिए fees $600 है. So आप सब कुछ लिख सकते हैं agreement में, और उस agreement भी court से enforce कर सकते हैं. So for example जैसे child support provisions डाले separation agreement, पर आप ये separation agreement को एक agency वो कराते हैं family responsibility office. उस agency से child support मिल सकते हैं और spousal support
वो पेयोर से अकाउंट निकालते हैं और आपके अकाउंट में डालते हैं पेमेंट्स। अब ये सेपरेशन एग्रीमेंट और वो उसके भी फॉर्म भी है, ये दोनों फॉर्म आपको सबमिट कर सकते हैं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस को, एंड वो सारे पैसे के लिए like it takes care of all the payments for child support or spouse support के लिए. So this is a very important thing. और जब आप divorce करेंगे, एक portion of जो affidavit of divorce कराते हैं, right? एक portion में इसमें बोलते हैं is there a separation agreement? Or, and then you would say yes, and उसकी date भी डाल सकते हैं. Okay, ये सबसे last slide है आपके निकाह कॉन्ट्रैक्ट और महर के इंफॉर्मेशन. तो ये इशू सुप्रीम कोर्ट पे जा like it's gone to Supreme Court of Canada, the issue of the महर and उसके क्या कैसे करते हैं. महर, the courts require, so this part Asma, I'm going to need your support because it's a little technical. So the mahar contract is just like any other contract. It has to be in writing, signed by both the parties, and witnessed for the court to enforce it. The next thing is that the parties entering the contract must do it voluntarily. So you have to know that, okay, this is a nikah contract. I am signing it. I know what it says inside of it, and I agree with everything that's in there, right? If you don't understand something, you should ask before you sign, because once you sign, that tells the court you understood everything that was in the contract. Can you just explain this part first that I just explained? तो जो भी मुआहदा हुआ है उसको इन्फोर्स करने के लिए, उनको लागू करने के लिए ज़रूरी है कि ये राइटिंग होना चाहिए. जो महर का कॉन्ट्रैक्ट है साइन बाय पार्टीज, दोनों पार्टीज उसको साइन करें, और फिर गवाह भी मौजूद हों कि आप लोगों ने साइन किए हैं. इसमें ये कि कोई जबर नहीं होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या साइन कर रहे हैं. महर जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ये हस्बैंड ने पे कर. I'll just explain that. Yeah, no. Sorry. So meher is so the meher, if it's a monetary amount or property or whatever, this is considered an obligation, right? If you signed a contract that I'm going to transfer ownership of a car as my meher, then they have to transfer the ownership of the car. That's in the contract. And so even if you get separated, that's still owed. It's still required for them to do that, because it's like any other domestic contract, and that rule basically governs the parties' obligations and rights. So at the end of a marriage, if there's meher, if he said, I'm going to pay you $10,000 and he's only paid you $5,000, he still owes you $5,000 unless you don't want it. Can you just explain that? तो अगर कोई किसी किस्म का उन्होंने वादा किया है घर में कि मैं आपके नाम पे ये कार कर दूँ, तो फिर आपको कार करनी ही पड़ेगी. ये भी एक मुआहदा है जो कि इन्फोर्सेबल है, और वो उनको करना ही पड़ेगा. और नो मैटर व्हाट के जो हो, लेकिन आपको जो कि वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो ये इन्फोर्सेबल. Okay. And before like applications के दान से पहले या negotiations से पहले आपको lawyer से consult करना है. आपको दिखाना है आपके marriage contract या आपके महर your nikah contract, आपको उसको दिखाना है, and वो उस lawyer वो बताएंगे whether your आपके contracts binding है या नहीं binding है. कभी होता है nikah contract में कोई mention नहीं है महर के लिए, कभी ऐसे होता है, and in that case, there could be an issue. So आपको just same as आपकी utilities or सारे कुछ insurance everything, आपको पता होना चाहिए आपके nikah contract कहाँ है, और इसके लिए एक copy ले आओ so that you can show your lawyer. Okay, so those are my slides. Shukriya Sister Asma for your support.
or I open it to any questions. Yes, thank you so much, Mr. Mustafa. There is a lot of questions. Yeah, maybe I'll send it to you. Or Asima, if you want to read them in English and then translate them in Urdu. Okay, just let me check. Where is it? Yeah. ब्रदर मुस्तफा मे बी आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दें तो वो फिर सारों विजिबल हो जाएगी थैंक यू The first question I can see is, please explain prenup agreement, premarital agreement. What everyone knows as how much of the South Asian practices. If one partner owns a house or has any assets before marriage, can decide if husband and wife will be sharing the rights over the house and other things. If the couple doesn't have kids after marriage, then who does the assets go to? Any Canadian law that says the property and cannot go to beyond the immediate family. So All right. Urdu में भी कर दें please translate. Or Uzma, if you want to ask that question again in Urdu. So that's a long question. Did you understand it, Mustafa? It's actually like 3 or 4 questions in one. Yeah. So I'm actually just gonna have to break it down because we'll maybe go one by one. So the first तो question I पहले think is explain करें कि prenup agreement और premarital agreement इसके बारे में कुछ बताएं. So I don't know if this was before my part in the presentation, but prenup या premarital agreement वो कहलाते हैं marriage contract family law में. जैसे regular contracts में two parties agree करते हैं कैसे assets divide होंगे जब separation में या marriage में कैसे assets share करेंगे और support क्या देंगे जब आप separate होते हैं. उसको कहलाते हैं prenuptial agreement. जो assets marriage से पहले है वो assets आपके हैं, right? Unless it's a house and you are living there as a family. फिर दूसरे designation करते हैं उस assets को वो कहलाते हैं matrimonial home. That is different. अगर जो आपके amount से bank account में है marriage से पहले वो आपके assets है और आपके लिए it's up to you how to deal with that. Inshallah, in our later session, हम इस issue के लिए asset division और सब कुछ more detail में we're going to discuss more detail. मगर अभी it's going to be very long explanation. मगर prenuptial agreement is a marriage contract, and marriage contract आप इसमें property rights के deal कर सकते हैं. वो child support provisions डाल सकते हैं, spousal support provisions डाल सकते हैं, and जो whatever पैसे आपको मिलने चाहिए जब separation होता है वो भी डाल सकते हैं. इसमें पूछा कि if one इसी की related sort of question है अगर निकाह में ये सारी क्योंकि निकाह भी contract होता है legal contract होता है उसमें कोई भी ये शिकें डाल दें अपनी जो भी demands हैं या जो भी you know जो aspects हैं जो कि आपने डालने हैं तो वो निकाह भी contract the legal Canadian legal law will consider करेगा निकाह का document as a legal document. They will consider it. मगर ऐसे मैं बोलता है that's why it's important to आपको a copy लेना है निकाह contract का और lawyer को दिखाना है because the निकाह contract has to meet certain criteria of the laws of contract. वो उसको writing में witnesses
signature, and uske provisions be the wording of the provision has to create an obligation. So, like for example, you know, Umar shall pay, you know, Farah $100,000 within X amount of time. That wording is very specific, creates an obligations, right? If the wording says that, you know, he may pay $100,000, right, until a certain date, then that's not an obligation because may change the whole meaning. So contract like signing or form important है, मगर उसके terms भी बहुत सारे important है, knowing what are your obligations, what are your rights in that contract, and do the rights get extinguished as well. Can I ask a quick question? So one of my clients, she's in the process of divorce, and her husband is asking her that you have to give me back the haq meher, like the money that is given, and the. So is it valid? Like is it? Urdu, please. Oh, अच्छा हक मेहर वो वापस मांग रहा है ना, वो जो हस्बैंड है उसका, मतलब जिससे वो डिवोर्स हो रही है, तो क्या मतलब ये इस तरह होता है, मतलब कि हक मेहर वापस लिया जाए औरत से? Okay, good question. I think जो आप पूछिए, वो I think that is in the जब आप खुला करते हैं, right? Then you have to give back the meher. Correct me if I'm wrong. मगर Canadian law में ऐसे कोई concept नहीं है, right? जो contract में है उस enforce, that's the obligation. तो उसको नहीं, like Islam के जो Sharia है or Canadian law है, they're not the same thing. It doesn't always line up. So if he makes this demand in court, they're not going to enforce the Sharia in the court. वो Sharia नहीं enforce करते court में, वो सिर्फ Canadian law में. Canadian law में कोई नहीं कुछ, unless it's in the contract, ये ऐसे concept नहीं है. So she's not legally responsible, in my opinion. अगर आप उसको बोलने हैं, उसको lawyer से बात करने और legal contract को दिखाने और circumstances को explain करने, before, you know, she decides what to do. मगर आप मुझे पता है इस्लाम में कोई rulings है, जैसे आपको खुला करना है और आपको मेहर वापस देना है, मगर I don't know how practical in her circumstances. I'm not a you know, scholar, so I can't make a ruling or give her advice for that. Okay, thank you. Okay. Okay, so are we going back to that question or the? Yeah, we can. उसमें second question ये था कि अगर एक जो partner है वो का घर है, owns a house, और कोई assets हैं उसके पास before marriage, I think you answered this one, can decide if husband wife will be sharing the rights over the house and other things. So this is simply the same thing in the contract. वो property के provisions डाल सकते हैं, क्या property किसके ownership में होता है, मगर सिर्फ exception है वो matrimonial home की है. Okay, जो घर आप दोनों रह रहे हैं बच्चे के साथ, उसकी designation different है और उसके rights and obligations different है. And दूसरे सेशन में इंशाल्लाह हम you know explain करेंगे matrimonial home क्या है और कैसे treat करते हैं legal case में. इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये है कि अगर कपल के बच्चे नहीं हैं आफ्टर मैरिज, फिर एसेट्स कहाँ जाएंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. Okay, the kids never get the assets. तो जो legal proceedings में सिर्फ spouses, between the spouses, right? So I'm not really understanding the questions. I don't know the scenario where the kids get the asset. हो सकता है वो. Wissam, if that is okay, can I ask? मैं पूछ लूँ खुद ही, क्योंकि मैंने इतना लंबा लिखा था ये question. Yeah, can you explain a little bit that part?
That Sure, part was a sure. little confusing for Sure. me. I'll speak in Urdu so that everybody can understand. मेरा Perfect. सवाल ये था कि prenup जो होता है, of course, it is for everything before the marriage. जो शादी से पहले जो भी one future spouse decides कि उनके पास अपना घर है, property है, जो भी है, and वो जो खातून हो या मर्द हो जो भी शादी करना चाह रहे हैं, इनके पास property है, etc. वो ये बोलें कि मेरे हस्बैंड या वाइफ को तो ना मिले लेकिन मेरे जो बच्चे होंगे फ्यूचर में उनको मिले, बट इन केस अगर इस सिचुएशन में कुछ साल के बाद उनके बच्चे ही नहीं होते तो क्या सिस्टम वो जो एसेट्स होते हैं वो किसको देता है? स्पाउस के पास जाता है या फिर जो उनकी फैमिली होती है, बहन भाई आउटसाइड ऑफ कनाडा, कुछ तो लीगल सिस्टम होगा यहाँ पर? Okay, so I think I understand. क्या होता है if the scenario, वो scenario है जब आपके marriage contract में आपके spouse के exclude हो, like if you choose as asset, जैसे let's say you own a plot in Pakistan, okay, in your name before marriage. आप डाल सकते हैं एक provision that जब आप separate करते हैं ये plot marriage से excluded है, okay, meaning that it will not go to the spouse. It will stay with you. It's still your asset. Nothing changes about who owns that asset. If you added a provision that if you have children, it goes to them, that's the marriage contract is not the right place to do it. It would be better to put it in your will, or because you can't give a gift to someone that doesn't exist. Of course, it wouldn't be valid. It wouldn't make sense. But you can put it in your will that this asset, this property goes to my children if they survive me, or to whoever you want it to go to. But it doesn't go to your spouse. If you have it in your marriage contract that this property is excluded from the marriage, it won't go to your spouse. And if you want it to go to someone else, right, like if you die, then you have to put it in your will. If you are still alive, then you can give it to whoever you want. So it really depends on why you are transferring this asset. But if you're saying that upon divorce, where does this asset go? Then it doesn't go, it stays with you. It doesn't go to anybody. Unless you have the kids. I think it's a clear answer. Thank you so much. Okay. Asma, if you need to translate that. Yeah, Sorry. तो उसमें अपने मेरे ख्याल काफी बताती है, मतलब निकाह का जो एग्रीमेंट है वो अच्छी जगह नहीं है कि उसमें आप क्योंकि आप फ्यूचर गिफ्ट नहीं दे सकते कि मेरे होने वाले बच्चों को, तो इससे अच्छा है कि आप विल बनवाएं और विल में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उसमें कि मेरे मरने के बाद किसको ये एसेट्स मिलेंगे, और आफ्टर सेपरेशन एग्रीमेंट कहीं भी नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही रहेंगे जो आपके एसेट्स हैं. You wanted to say? I think that's accurate. Yeah, as long as it stays separate from the marriage, as long as you wrote it in the contract that this property is excluded from the marriage. I think we might have covered that. So I think we can go to the next question. Rosina, it's about the will you're trying Yeah, to... I was asking about the will, that is it necessary to write down a will, or is it just okay if you just let your children and spouse know about what you plan for your properties here and back home? अगर आपकी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है उसके बारे में यहाँ बच्चों को, हस्बैंड को बताया हुआ है कि क्या चीज किसकी है, और यहाँ पे भी जो कुछ है वो भी वर्बली बताया, तो उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? क्योंकि बच्चों को पता तो है एज सच, लेकिन ये है कि मैंने कभी लिखा कुछ नहीं है. Okay, good question. Islam में or Canadian law में will only valid if it's in writing. So write it down. Magar aapko, you don't have to also you're gonna have to translate, but you don't have to hire a lawyer to write a will, but you can write your own will, but it just has to be signed by you in the presence of 2 witnesses. That will make it valid. The lawyers are helpful because they're going to make sure that the terms of the will are clear enough and that you have all the other information, like for example,
who is the executor of the will and who are the beneficiaries of the will. But if you haven't written it down, Islamically, the Prophet ﷺ said that you should write a will, right? I have nothing, I don't really have assets, but I should still have a will. If you have assets, definitely write your will as soon as possible. Communicating verbally after you pass away, the issue is the beneficiaries, the children, the spouse, the parents, the brothers, sisters can all fight about it. And no one will know for sure how it should be divided. So to save yourself some trouble for your family, write it down, have it signed, have it witnessed for it to be valid. ये है कि आपको मुस्तफा भाई बता रहे हैं कि लॉयर को हायर करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपनी एक राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेनिफिट की सारी बात है कि लॉयर से कराएंगे तो और हर चीज को देखेंगे और प्रॉपर, लेकिन इसके लिए है कि वैसे अगर आप इन राइटिंग में लिखें और साथ में कोई विटनेस हो, 2 विटनेसेस हो जो कि एडल्ट हो और अब वो आप उनके सामने साइन करें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है. Yeah, and just mention that it's in Canadian law, a will is only valid in writing, not verbally. और कनाडा में जो लॉ है वो यही है कि इसको हमेशा इन राइटिंग होना चाहिए, मतलब लिखी हुई होनी चाहिए, वरना वैलिड नहीं होगी. Okay, so the next question. मुस्तफा भाई, रोजीना ने जो सवाल पूछा है इसका सेकंड पार्ट जी. ये था कि अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा भी होती है, बिकॉज Oh, मैंने sorry. अभी जी दैट्स ओके, यू कैन आंसर. मैंने अभी कुछ महीना पहले विल बनवाई थी, सो आई हैड द नॉलेज ऑन दैट. आप शेयर कर लें अपना, अगर नहीं अंदाजा होगा तो आई कैन शेयर. Sorry, so do you want to share some information, or do you want to ask me Yeah, whether sure. it's foreign will? Well, नहीं, आई foreign थिंक wills, रोजीना हाँ पूछ रही थी ना. foreign wills are still valid. Those are still valid wills. Of course, if you're trying to enforce it in a Canadian court, right, then you're going to want to get an official translation of it. It's still valid. You should be able to use it. Thank you, Usman. Thank you, Mustafa. So, Mustafa, I have put a question in the chat, direct question to you. If you can check your chat, and if you want to talk a little bit about that, just briefly. I mean, I know that the time is up, so. Okay, let me see if I could. Before I get to that, is there any other questions that are in the public chat? I think we covered all the questions in the chat, unless I missed something. I think that the only other question I see here is that meher can be taken by women at any time in life. It is advised to give the meher as soon as possible, as women can start. I think this is just a comment from Sister Ozma. And yeah, of course, for marriage, you definitely, the idea is that you get the meher sooner than later. It's the woman's, like, you can specify a time to pay it, or you have it all paid up front. I'm not going to comment too much on it because that's a religious matter, and I don't want to. Everyone has their own scholars they refer to, so I would say go to an imam or scholar you trust to get specific advice about your meher rights. But I can say that you can enter a contract for specifying the duration term of when it should be paid and how much. I don't see. Sorry, go ahead. एक और क्वेश्चन भी चैट में है. Joint holding of everything. If wife makes less amount or doesn't work, how will that work then? And is this payment of all the joint holding is for a year before settling everything for the divorce? Okay. You talked about, yeah, so that's a lengthy question, so maybe. Why am I not seeing that? Oh, I think Wissam sent me, so I only can see that. Oh, okay. Can you post it in the public or for everybody? Yeah, it was the first question by Usman, the first question in the chat. I just send it to. For any assets in Pakistan, the government is now clear rules there and to. Oh.
Okay, so yeah, so I think what Uzma is saying is that so in jurisdictions like Pakistan and Dubai and stuff, right? Like UAE, they actually have Sharia courts, and they have and I know Pakistan did introduce some more streamlined inheritance laws. You're gonna have to follow their procedure. Any properties that are over there, you're gonna have to follow the laws of that land. Um, Anything in Canada, you can follow the Canadian laws and stuff. But I know I had a client that passed away recently, and he had assets in UAE and Pakistan. And specifically for the UAE, if you're a Muslim, they're very strict. They don't even ask you about a will. They just divide it based on your inheritance laws that are in the Sharia. So you can't. It's just no way to get around it. You just have to follow their laws over there. So this, I don't know if that was sufficient. Also, did you want to translate that at all or simplify it, I guess? I think it's simple that जहाँ के कानून होंगे वही वहीं पे लागू होंगे. अगर पाकिस्तान में है मुस्लिम है तो आपकी जो भी होगी वो सेम हिसाब से वो तकसीम कर देंगे. और जहाँ भी लैंड जहाँ भी कानून होगा, अगर कनाडा में है तो कैनेडियन लॉज अप्लाई होंगे, और अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी लॉज अप्लाई होंगे. Okay, so in the situation of joint holding. Okay, so there's this most recent questions, a couple of questions, so I'll try to take it one at a time. Okay, so Justin, I'll answer the simple part, okay? In terms of the records and proofs. Okay, so if you're a joint owner of any of or account holder on a bank account or a credit card or insurance policy insurance, if you know the institution, if you know the bank or the insurance company and you're an account holder, you can always call them and then provide your name, date of birth, and so on, and obtain the information. Have them send it to you, or go into the bank itself and get that information. If you have no idea about for utilities, same thing. But if you can't find out yourself, or you can't find like a bill lying around or on the computer or something, then at the end of the day, we're going to have to either through your counsel or through ask your spouse to provide you, hey, I want to see the bill, and then note down the account number on the utility bill. Note down the any what do you call it, insurance policy numbers. It's going to be, you'll have to be a little bit like a detective to try to get this stuff to the best of your ability. If you are in court, then you can actually request the other party, and you can bring a motion even if you have to get that information disclosed. अगर तो जॉइंट आपका अकाउंट है किसी चीज़ के लिए भी, फिर तो इंफॉर्मेशन लेना आपके बड़ा आसान है कि अगर बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो आप बैंक में चले जाओ, उससे पूछ लो, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. लेकिन अगर इन केस आपका नाम नहीं है, और आप सबसे पहले तो ये कि दूसरी पार्टी से पूछेंगे कि वो दे दें आपको इंफॉर्मेशन. अदरवाइज अगर कोर्ट में केस जाता है तो फिर आप मोशन फाइल कर सकते हैं दूसरी पार्टी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और या थ्रू आप लॉयर के जाओगे. Okay. So in the situation of joint holdings of everything, if the wife makes less, it doesn't work. How would that work then? So this question is a little bit confusing, but I'm guessing if you and the spouse have joint assets or joint owners of everything, and then she is earning less, how does that work? So this is how I'll answer. Property division is separate from spousal support, and which is separate than child support. Okay, जो assets आप jointly own करते हैं, right? If it's a car, right, you either sell the car and then you split the money in half.
or one person keeps the car and they buy it from the other party, right? If it's a bank account, joint bank account hai, jo paise account mein hai, it's supposed to be divided equally, unless there's a reason to show that, okay, इस account में, you know, ज़्यादा मेरे पैसे वो, you know, pay इस account में गए हुए, फिर you would ask for your right from that money. Asset division is separate than spousal support. There's a different calculation for spousal support or child support. आपके employment prospects or आपके education, आपके length of marriage, there's a lot of factors for spousal support, and आपके work history, आपके current employment, spousal support में issue में वो relevant होता है, not for the property division. Property division सिर्फ वो important है कौन owners है on title or या account holders, etc. And it's the payment of all joint holdings for a year before selling everything for. I don't know about this question. I'm not really sure what this question is saying. It says, and is this payment of all joint holdings is for a year before settling everything for divorce? So if whoever wrote this question, if they can ask it again, then. Sure, Mustafa, I'll ask again. So my question was कि अगर किसी के पास property भी है, कार भी है और line of credit भी है और joint नाम पर है सब चीजें, तो जो अगर let's say mostly जो हम देखते हैं वो औरतें सफर करती हैं abusive relationship में, अगर उन दोनों का नाम है तो क्या वो जो wife है वो भी 1 साल के लिए, आपने बोला कि till the time of separation, जब तक कि वो divorce के लिए फाइल नहीं करती 1 साल के बाद, क्या वो भी contribute करेगी towards the line of credit या house mortgage में, और जबकि वो कमाती भी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कम कमाती है? How would that work? So it's like I said before, whoever's name is on the account for any debt, they're responsible jointly with the other party. So that means to say if no one was paying off their credit card and it gone into collections or whatever, they would go after first whoever has better ability to pay. Practically speaking, they're going to go after maybe the husband who's making an income, and they will start trying to get the money from him. And if they can't get it from him, they're going to go to you. And if they can't get it from you, they're going to go after your assets. So it's not so much it's a case-by-case basis, okay? So what I would say is that 1 year between your separation and the day you can actually get a divorce, the idea is during that time, you try to figure out how to deal with all of these debts and assets, to divide them and to pay off the debt. To be honest, I'll have to know, your lawyer would have to advise you specifically how to deal with each of your assets and debts. But there's no like strict exact rule, except that if your name is on a mortgage, you're responsible just as much as whoever else's name is on it. If you own an asset that both your names are on, both of you are equally entitled to that asset, its value. I hope that kind of explains. Thank you, Mustafa. Okay. I don't know if there's another one. सॉरी, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो एक और सवाल है मेरा, जो मैंने ऊपर मेंशन किया था कि साउथ एशियन कल्चर में प्रीनप जो है इट्स अ स्ट्रगल एंड नॉट मेनी पीपल नो, तो कितना आपने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि प्रीनप सिचुएशन होती है साउथ एशियंस के लिए? South Asians not so much. Arabs के लिए बहुत होते हैं more or less, because they have some cultures, Arab cultures have I think what's called mutaakhir, like agreements, and so they do have that. But South Asians, I've rarely ever seen it. In some cases I have, but that's only because the husband usually has a lot of assets that are tied to businesses, and you want to keep those business assets separate from the marriage, because of course they have nothing to do with the marriage. They have everything to do with just like their separate corporation, like those business interests where they share the business with other co-owners that are not related to the marriage. Those are usually, I see those situations, yeah.
but anything that's non-business related, usually it's not there. I would say probably we could try to introduce this into the community through the nikah contract. Okay. Thank you so much, Mr. Mustafa. It's 10 minutes over the time. Thank you so much for offering your time. And I guess we can stop here. Of course, there will be other sessions, 3 other sessions. Maybe you can bring those, any other question to that session by the end if there is time, or maybe you can send them to me over the email. Thank you so much, Mustafa. Thank you so much, Esma, and everyone for joining us tonight. Thank you. Thank you. Thank you so much. Wissam, when is the next session? It's next Thursday. It's on the 7th, October the 7th. And the title or the topic is? It's going to be... related to marriage? Yes, it's going to be separation, divorce, spousal support, and equalization. Okay, thank you. We'll join you again. Thank you so much. Bye-bye. Nice to Assalamu see alaikum, you. everyone. Walaikum salam.